ठीक है, आई गेस स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार अब आज वाली क्लास के अंदर मुझे उसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस करवाने हैं। सो लेट मी गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। तो ये ऑलराइट यार, सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे वर्डिंग्स देख लो तो मैं एमसीक्यूज का काम कराता जाऊँ। मैं आंसर्स इरेज नहीं कर रहा और वर्किंग कर लेते हैं, फिर साथ साथ उसके आंसर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। So a student makes measurement from which she calculates the speed of sound as 327.66 meters per second. She estimates that her result is accurate to plus minus 3%. Which of the following gives her result expressed to an appropriate number of significant figures? Okay, so they want you to write down the answer for the speed of sound to an appropriate number of significant figures. पहले working देख लीजिएगा। तो यार as a first step मैंने 3% कैलकुलेट कर लिया है। So 3% of the value turns out to be 9.82. Now remember, we have already discussed previously that errors are supposed to be rounded off correct to one significant figure. So अगर आप 9.82 को one significant figure पे round off करोगे तो आपका आंसर चेंज करके 10 बन जाएगा, which means कि आपके एरर का रिजल्ट वर्कआउट करके 10 आ गया। ठीक है, फिर अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी में ये चीज डिस्कस करी थी। मैं स्टेटमेंट अब लिख रहा हूं कि इफ the error is correct to the nearest tens, then to maintain consistency, the true value must also be rounded off to the nearest tens. Hence, the value that was given to us, 327.66, if you round it off correct to the nearest tens, then the value turns out to be 330, which makes option number C as the correct result. ठीक है, so मैंने वर्डिंग्स भी लिख ली है और कैलकुलेशन वगैरह साथ में शो भी कर दिए। कुछ पूछना हो तो फिर अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। सो सेकंड वाला देख लें। Question 2 में it says, a thermometer can be read to an accuracy of plus minus 0.5 degrees Celsius. This thermometer is used to measure a temperature rise from 40 to 100. ठीक है, सो इनिशियल टेम्परेचर जो आपको गिवन है, साइड की वर्किंग देखिएगा। इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन टू यू एज 40 and the error is given to you as 0.5. So initial value can be quoted as 40.0 plus minus 0.5. Final temperature भी question में given था, that was 100 and the error was also given 0.5. The question is asking us to calculate what is the percentage uncertainty in the measurement of temperature rise. So the question is asking us कि आपको temperature rise के अंदर error calculate करना है. So I've done the working on the side, तो आप check कर लीजिएगा। तो temperature rise निकालने के लिए we need to go for subtraction. So final minus initial. So if you want मैं brackets में लिख भी देता हूँ कि temperature rise will be final minus initial. ठीक है, subtraction अगर आपने कर लिया हो तो the rise in temperature turns out to be 60 plus minus 1. And once you have that answer, the question is asking us to calculate the percentage error. So percentage error will become 1 upon 60 multiplied by 100. आप solve करेंगे तो आपका result 1.7 पर आ जाएगा। सही? So let me repeat myself. I wrote down the initial temperature as 40 plus minus 0.5. Then I wrote down the final temperature as 100 plus minus 0.5.
Then we worked out the difference to obtain the temperature rise. So that was 60 plus minus 1. And the question was asking us to calculate the percentage error in this measurement. That was 1 upon 60 times 100. So the result turned out to be 1.7%. All right. Next वाला देखिएगा. अच्छा यार मैं ये टिक्स वगैरह जरा साथ साथ इरेज भी करता जाऊं ताकि थोड़े से नंबर्स जो है ना वो रीजनेबल लगे देखने में. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा. आप रीड पहले कर लो फिर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ. स्टेटमेंट्स पहले रीड कर लीजिएगा. So in question 3 it says, in an experiment, a radio controlled car takes 2.5 plus minus 0.05 seconds. So time आपको given है to travel a distance of 40.0 plus minus 0.1. See, so in the question they've given you the time and the distance. The question is asking us what will be the average speed of the car, वो निकालना है, and what will be the uncertainty in the measurement, वो निकालनी है. Okay, so if you start your calculation, so the true value will be speed is equal to distance upon time. So that is 40 divided by 2.5. So the true value turns out to be 16. So एक result तो आपका ये आ गया. And then if you calculate error, so error का formula हमने किया हुआ था. So delta S upon S is equal to delta D upon D plus delta T upon T. Let's apply this result based on the numbers provided to us to see कि error कितना बनेगा. So delta S upon speed का आंसर आपने 16 कैलकुलेट किया था. Delta D upon D 0.1 divided by 40. Delta T upon T 0.05 divided by 2.5. So if you cross multiply 16 on the other side, तो आपके एरर का आंसर वर्कआउट करके आ जाएगा 0.36. Now remember, error was supposed to be rounded off correct to one significant figure. So 0.36 changes to become 0.4. And then the true value must match with the error. So अगर error आपके पास 0.4 आता है, then the true value should be written accordingly. So the true value should become 16.0 to maintain consistency. Hence your result turns out to be C. ठीक है. कोई suggestions हो तो प्लीज पूछते जाइएगा. All right, next वाला देख लेते हैं. So question 4 के अंदर the density of a material of a rectangular block is determined by measuring the mass. एक सेकेंड ना माहीन को रूम में लेट इन कर दूं. All right, sorry. So the density of the material of a rectangular block is determined by measuring the mass and the linear dimensions of the block. The table shows the results obtained together with the uncertainties. Your mass given है, length है, breadth है, और height है. The question goes on to say that the actual value of the density is given to us. This is 2.50. And the question is asking us कि अगर आपको calculate करके निकालना है how much is going to be the error or the uncertainty in the result. ठीक है, so based on the numbers provided to us, so since we have to find delta D, we have to find the error in density. So basically we have to find delta D. तो formula देख लीजिएगा. So density is equal to mass upon volume can be written as length into breadth into height. Next step, delta D upon D equals delta M upon M plus delta L upon L plus delta B upon B plus delta H upon H. ठीक है, fractional errors to be added together in case when physical quantities get multiplied. इसके बाद मैंने numbers लगा दिए हैं based on the numbers provided to us. So numbers आप एक नजर खुद check कर लो. Numbers go through कर लीजिएगा please. The final answer that you will get for delta D is the one which I'm underlining.
and since error is supposed to be written correct to one significant figure, तो 1 SF के ऊपर your final answer turns out to be 0.05. ठीक है, so that means C हो जाएगा. Okay, next वाला देखिएगा. Sorry यार. तो क्वेश्चन 5 के अंदर वर्किंग पूरी लिख देता हूँ. So question 5 में it says the resistance of an unknown resistor is found by measuring the potential difference across the resistor and the current through it and using the equation R is equal to V upon I. The voltmeter reading has a 3% error, percentage में given है mind you, and the ammeter reading has a 2% error. What will be the uncertainty in calculating the resistance? The values are also given to us in percentages and they want the answer to be given also in percentages. So अब क्या working करेंगे? If you start with the basic formula, you should end up with this answer, delta R upon R. For voltage, it should be delta V upon V. And for current, it should be delta I upon I. Okay, now the fact that all the values are given to you as percentages. So my suggestion to you would be multiply the entire equation by 100, as in change everything into percentage because the information given to you is also in terms of percentage. And you want the answer also in terms of percentage. It kind of makes sense to multiply throughout by 100. और इसका एडवांटेज ये होगा कि अब जब मैं वैल्यूज को प्लग इन करूंगा ना, so in place of delta V upon V into 100, I can directly write down my answer as percentage. This was given to us as 3%. And similarly, for current as well, since the value was given to us as a percentage, so delta I upon I into 100 can be directly replaced by the term 2%, which was the case for current. And the final answer for percentage error in case of resistance turns out to be 5%. So that is C. Okay, so percentages were given था. Hence, I multiplied the entire equation by 100 to convert all the terms into percentages. Or voltage का percentage error was 3%, so I directly wrote that down. Current के लिए it was 2%. उसको भी insert कर दिया, and the final answer turned out to be 5%. Question 6 देखिएगा. Okay. An experiment is done to measure the resistance of a wire. The current is 1.0 plus minus 0.2. And the voltage is 8.0 plus minus 0.4. You are supposed to calculate the resistance and you are supposed to calculate the error as well. Okay, so to calculate the resistance, that is the true value. So true value ka result can be directly obtained. So R is equal to V upon I. If you plug in the numbers, the true value turns out to be 8 ohms. So ये तो आपका आधा result आ गया. Then to calculate error, apply the formula delta R upon R is equal to delta V upon V plus delta I upon I. Numbers मैंने plug in किए, वो आप जरा check कर लो. Solve करेंगे तो आपके पास डेल्टा आर का आंसर आ जाएगा 2. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैंने की हुई है, सो आई गेस आप देखोगे तो आप फॉलो थ्रू कर सकते हो. So the true value is coming out to be 8 and the error is coming out to be 2. So the final answer should be written as follows. So error should be correct to one significant figure, hence 2 stays as 2 and the true value must match with the error. So 8 plus minus 2, which brings us to D as the answer. अब तक यार कोई चीज रिपीट करनी है प्लीज, ताकि बिफोर आई मूव ऑन टू 7 जरा प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. भले कमेंट में बता दो या वैसे कमेंट कर दो या जो भी आपको सही लगता है. मैंने कमेंट बॉक्स थोड़ी देर के लिए ओपन किया हुआ है, सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाऊं. ठीक है, सो आई एम प्रिज्यूमिंग के
ऑलराइट, थैंक यू अस्मा। ऑलराइट गाइस, 7th वाला देख लो। वर्डिंग्स आप पहले रीड कर लो बिफोर आई स्टार्ट विद द वर्किंग। सो इट सेज अ मास m, मैं सिंबल्स को सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, हैज एन एक्सेलरेशन a, it moves through a distance of s in a time of t. The power used, पावर की बात हो रही है, in accelerating the mass is equal to the product of force and velocity. So they are saying that the power used is equal to force multiplied by velocity. ठीक है, the percentage errors are provided to us. Once again बेटा सारे के सारे आंसर्स परसेंटेजेस में गिवन है, मास है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है और टाइम है। ठीक है, एम ए एस एंड टी, mass, acceleration, distance and time. And the question is asking you to calculate. Answer भी percentage में देना है. How much is going to be the percentage error in calculating the power? ठीक है, अब पहले फॉर्मूले को मैं सिंप्लीफाई कर दूं. So the terms that are given to me, उसकी basis पे I can replace force by the term mass into acceleration, and I can replace velocity by the term distance upon time. ठीक है, now mind you मैंने वो वाले terms introduce किए हैं जो मेरे question में मुझे given थे. So I was given information regarding mass, regarding acceleration, regarding distance and regarding time. Hence मैंने formulation भी ऐसे ही करी है. अब apply करते हैं. The left hand side should become delta p upon t. On the right hand side, mass should be delta m upon m. Acceleration should be delta a upon a. Distance should be delta s upon s. Time should be delta t upon t. And since the values are given to us as percentages, so let me once again multiply throughout by 100 before I plug in the values. तैमिया एक सेकेंड, अभी आंसर दे देता हूँ. ऑलराइट, so मैं जरा नंबर्स लगा लूं बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन. सो लेट्स सी रिजल्ट्स क्या बनेंगे. सो यार टाइम के लिए द परसेंटेजेस वर गिवन टू मी, आप जरा प्लीज देख लीजिएगा. टाइम के लिए इट वाज 0.5%. डिस्टेंस के लिए इट वाज 1.5%. एक्सेलरेशन के लिए इट वाज 1%. मास के लिए आई बिलीव इट वाज 0.1%. सब सारे नंबर्स लगा के चेक कर लीजिएगा. I believe the final percentage should turn out to be 3.1%. Consequently, C बन जाएगा. काफी लोग पूरी वर्किंग नहीं करते हैं, वो मेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं एंड दे रियलाइज द फैक्ट कि सिंस सारे के सारे एडअप हो रहे हैं, सो वो पूरी वर्किंग को स्किप करके बस जो एरर्स होते हैं ना उन सबको डायरेक्टली एडअप कर देते हैं. सो अगर आप डायरेक्ट वर्किंग करते हैं ना एडिशन करके भी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, which will amount to 3.1 as you can see in this working. So you don't need to write down the entire steps or anything. The fact that fractional errors are always added together, so you kind of know कि आपका आंसर एड अप करके 3.1 बन जाएगा. ओके, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं एक सेकेंड ना कमेंट रीड कर लूं. तैमिया ने क्या लिखा था? ओके, तैमिया ने लिखा था, सर कांट वी जस्ट यूज द फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम? यस यू कैन, बट मैंने तैमिया इसलिए यूज किया फोर्स इनटू वेलोसिटी because I think that was given to us in the question in the second line. But वैसे you are right. Since you know the formula of work done from O levels, so you could have used power is equal to work done upon time and then simplified from that point to वो भी सही होगा. ठीक है, उससे भी इनफैक्ट सेम आंसर आ जाएगा. But since formula given था, so I went with this one. All right. 8th वाला थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, तो आप पहले जरा रीड कर लो. मैं आंसर इरेज कर रहा हूँ.
ताकि एक्सप्लेन पूरा का पूरा प्रॉपरली कर लूं। ठीक है, जरा केयरफुली देखिएगा। सो क्वेश्चन 8 के अंदर इट सेज अ स्टूडेंट यूजेस अ डिजिटल एमीटर टू मेजर करंट। द रीडिंग ऑफ द एमीटर, एक सेकेंड यार, हम्माद इज जॉइनिंग द सेशन, तो मैं उसको एडमिट कर दूं। ठीक है। सो अ स्टूडेंट यूजेस अ डिजिटल एमीटर to measure a current. The reading of the ammeter is found to fluctuate between 1.98 and 2.02. Okay, let's stop at this particular point. Before I continue reading further, recognize if the reading fluctuates, then the term fluctuates implies that there is a presence of random error. ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। तो फ्लक्चुएशन का मतलब होता है रीडिंग का इंक्रीज करना एज वेल एज डिक्रीज करना। सो दैट वाज द प्रॉपर्टी, इफ यू रिकॉल, दैट वाज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद रैंडम एरर। सही। सो अब इफ आई आस्क यू, यार, if the reading fluctuates between 1.98 and 2.02, so what would be the most appropriate way of writing down this value? So would you agree, अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज बनेगा 2.00। तो अगर आपको इस वैल्यू को लिस्ट करना हो, तो आई गेस यू वुड अग्री विथ मी that the best approach of writing down this value should be 2.00 plus minus 0.02. Now for those of you who are wondering कि मैंने ये वाला आंसर जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है, ये आंसर कैसे सोचा होगा, सो आई थिंक अगर आप ऐड करोगे तो आपको 2.02 मिल जाएगा, विच इज द अपर बाउंड, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1.98 मिल जाएगा, विच इज द लोअर बाउंड। सो द क्वेश्चन हैड गिवन यू द रेंज फ्रॉम 1.98 going up to 2.02. So it made sense if the value fluctuates between 1.98 and 2.02, then the mean value turns out to be 2.00. And to take the fluctuation into consideration, I've written down the value as 2.00 plus minus 0.02, ताकि एडिशन से अपर बाउंड आ जाए 2.02 और सब्ट्रैक्शन से लोअर बाउंड आ जाए, विच इज 1.98। तो पहले तो मैंने ये चीज फिगर आउट कर ली है कि मेरे जो रैंडम एरर की वैल्यू है, मेरे जो रैंडम एरर की वैल्यू है, दैट अमाउंट्स टू 0.02। मैं अमीना अभी तुम्हें आंसर दे दूंगा बेटा। लेट मी जस्ट कंक्लूड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर मैं आंसर देता हूँ। ओके, नाउ इफ द क्वेश्चन स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, so अगर मैं नेक्स्ट वाली लाइन को कंप्लीटली इग्नोर कर दूं, सो इमेजिन करें ये स्टेटमेंट होता ही नहीं, तो आपको नजर भी नहीं आ रहा इस वक्त। अगर क्वेश्चन बस इतना होता, देन बेस्ड ऑन दिस वर्किंग हमारा बेस्ट आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन नंबर बी। If the question only dealt with random error and if the question asked us to suggest कि यार best possible answer कौन सा बनेगा, so based on the result that we are getting, हमारा answer 2.00 plus minus 0.02, so option number B हो जाता। Having said that, the question continues further. तो जिस लाइन को मैंने हाईलाइट करके रिमूव कर दिया था ना, मैं अब उसको वापस से शो कर रहा हूँ। So the question continues further, और नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर then the question says the manufacturer of the ammeter states that any reading also has a systematic error of 1%. So now in the remaining part of the question, they have also included the presence of systematic error, which amounts to 1%. इसको मैं ब्लू वाले मार्कर से कर रहा हूँ ताकि आप रेड और ब्लू को डिस्टिंग्विश कर लो। So a systematic error of 1% means कि अगर आप 1% कैलकुलेट करोगे
तो आपके सिस्टमैटिक एरर का अमाउंट इतना बन जाएगा. So basically your instrument has both errors. रैंडम एरर की एक्नॉलेजमेंट हो रही थी बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस, और सिस्टमैटिक एरर की एक्नॉलेजमेंट हो रही थी बिकॉज द क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेटेड दैट. नाउ इफ यू रिमेंबर, तो हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि एरर्स को हम लोग कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है ना. सो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, एरर्स टू बी एडेड टुगेदर. So your random error amounts to 0.02. Your systematic error also amounts to 0.02, which means कि आपके जो दोनों का collective amount बनेगा, that works out to be 0.04. So this includes the systematic error as well as the random error. And now the question was asking us कि best option कौन सा बनेगा. So based on the value of the error, we can decide कि आपके पास D वाला option takes into account both forms of errors, जिसमें systematic भी आ गया और उसके अंदर random भी आ गया. So let me once again explain, फिर मैं आपके comments को read कर दूं. So in the first and the second line, the term fluctuate implied presence of random error. So looking at the numbers, I was able to recognize that the random error amounted to 0.02. So that was one working. Then from the blue highlighted marker, there was also a systematic error which amounted to 1%. So I calculated 1%. The coincidentally systematic error also turned out to be 0.02. Then since errors ke cases में we are always supposed to add them, so total error worked out to be 0.04. And then when you compare the answers, so D वाले option के अंदर आपके पास error की association best possible form के अंदर given है. ठीक है. अच्छा, अब मैं जरा comments आपके देख लूं, शायद अमीना कुछ पूछ रही थी. Okay. Okay, can anybody suggest कि मुझे किसका आंसर देना है, because I'm kind of lost कि मुझे idea नहीं है. Maybe I've just answered the questions. So Shazain suggested something and then Amina suggested something. So have those questions being answered? Okay, so Amina, yes sir, I understood, bata diya hai. Shazain, can you help me Sir, out? I get what you Ji. did in that, like, you took 2 as your true value because it was in the middle and plus minus 0.02. So, but I wanted to ask, is it always going to be right in the middle? Can you have like an asymmetric thing, like you have plus 0.1 and minus 0.3 error, like it's not equal in both directions? Okay, fair enough. So yeah, if the value would have been given to you, not these numbers, but something else, we will always calculate the mean value. So the mean value will always be the value strictly in between the upper bound and the lower bound. So in my case, for example, Shazain, it was 1.98 and 2.02. So basically, I calculated the mean value. So what I did not show in terms of working was this. Okay, this is what I mentally did: 1.98 plus 2.02, the upper bound and the lower bound, added together to work out the mean value divided by 2. और शाज़ेन, यहाँ से मेरे पास बेटा जो आंसर आया था, that was 2.00. Hence I took this value as my true value. ठीक है शाज़ेन, एक तो ये चीज होगी. ओके, तुमने भी कर दिया, got it. अच्छा, secondly शाज़ेन, also recognize, look at all the options that are given to me. So if you look at the options, let me select a suitable color. Light pink would do, the rose color. Shazin, this kind of the points which I'm highlighting kind of makes sense. The examiner had already told us which value should I go for. No, because all the options, the true value was given to me as 2.00. So मुझे actually calculate करना भी नहीं पड़ा था. I was just looking at the answers, which is why मैंने calculate mean को किया नहीं था. The reason why I did not do the calculation of the mean was because I was actually paying attention towards the answers. And since all the answers basically started with the same value of 2.00, so I took that for granted. तो मैंने इसलिए वो cross वाली working को completely eliminate कर दिया था. ठीक है, if that kind of makes sense. तो फिर मैं आगे proceed कर जाऊं यार. All right. तो अगला वाला देख लेते हैं यार. सही है, next वाला.
रीड आप लोग कर लो, फिर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं. Okay. So yaar, it says a student finds the density of a liquid by measuring its mass and its volume. The following is a summary. So the mass of the empty beaker is given to you. Mass of the beaker plus the liquid is also given to you. So let's start with these two numbers first. So mass of beaker plus liquid. यार मैंने गलत कलर सेलेक्ट कर दिया, sorry. Purple would do. So mass of beaker plus liquid is 70 plus minus 1 grams, and mass of empty beaker, just the beaker itself, is 20 plus minus 1. है ना? So I guess यहाँ से you should be able to figure out the mass of the liquid. Subtraction करेंगे, so liquid का mass, the true value will be 50. Errors to be added together, so of course 2. So the first result, mass of the liquid, work out करके आ गया. अच्छा, volume of the liquid already given है, so I can just copy that down as it is. This is 10 plus minus 0.6. ठीक है, and the question is asking us कि आपको density के बारे में suggestion देना है. So density equals mass upon volume. So if you apply the formula, you will end up getting this answer, delta D upon D, delta M upon M, delta V upon V. Let's put in the values. The actual value of density is given to us, 5. I'm highlighting that with the yellow marker right now. That is given to us. Delta M upon M, I'm copying it from the top, 2 upon 50. Numbers आप लोग देख लो. And delta V upon V, I'm again copying down the red numbers, 0.6 upon 10. So if you cross multiply this through, the error in density can be worked out, which I believe turns out to be, I have no clue कितना आ रहा है. Sorry, मैंने आंसर मिटा दिया था. So if anybody can just help me out, 0.5. Thank you, Tamia. ओके, 10th वाले का तो आई गेस आप लोग खुद ही देख के मुझे ओके करते जाओ. मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, तो आप रीड थ्रू पूरा कर लो 10th को. मैंने कैलकुलेशन साइट पे शो करी हुई है, सो आई गेस काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप लोग शायद खुद ही जज कर लोगे. तो जरा फॉलो थ्रू कर लो. अगर हो जाए फॉलो तो मुझे ओके करो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है. मुझे एक क्वेश्चन और भी कराना है बिफोर आई मूव ऑन टू द एमसीक्यूज. तो मैं एक थ्योरी वाला क्वेश्चन कराना चाह रहा था. दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम वे बैक बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो बहुत पहले आया था, एज आई सेड, तो माइट एज वेल करा दूं. सो क्वेश्चन जरा देख लेना. मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूं एंड देन आई अप्रोच द क्वेश्चन. सो इट सेज the diagram below. I'll just construct the diagram in a while. Shows a circular pipe, the outer diameter capital D and the inner diameter small d are given below. So yeah, the outer diameter is given as follows: 16.5 plus minus 0.5 centimeters,
and the inner diameter is 7.5 plus minus 0.5 centimeters. डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ. So this is the diagrammatic representation for the circular pipe given to you. 2 से construct करता हूँ. Let me label the relevant portions as well. So with the black marker, I am right now showing you the outer diameter. That is capital D. And with the green color, I'm showing you the inner diameter. That is small d. ठीक है. Now the question goes on to ask you, next time मैं लिख रहा हूँ, calculate the area of the shaded region. अभी shade कर देता हूँ. Along with its uncertainty. Giving your answer in centimeter square. अच्छा, centimeter square का मतलब है conversion. Don't pay attention towards any conversion. So you're not required to make any conversions basically. And the shaded region is the one shown with the red marker. Okay, so before I start with this working now, or before you give me any suggestion, as a side note, मैं पहले एक working आपसे पूछ लूं, because then a while you'll realize कि ये working मुझे आगे जाके करनी पड़ेगी. मैं पहले एक काम पहले से कर लेता हूँ. ठीक है, you will in a while realize कि ये मुझे आगे चाहिए होगा, तो मैं might as well अभी ही कर लूं. Okay, so give me the answer of two things first. Capital D आपको given है. Small d is also given. Conversion करने की जरूरत नहीं है, as I have suggested. So पहले मैं ये करता हूँ, and in a while you will see कि मुझे इसका benefit होगा. कि आप मुझे जरा इसका आंसर पहले दे दो कि कैपिटल D प्लस स्मॉल d का आंसर कितना बनेगा. सो रिमेंबर एडिशन का रूल क्या होता था. ठीक है, तो एडिशन के अंदर आपके पास ट्रू वैल्यूज टू बी एडेड टुगेदर एंड द एरर्स आर आल्सो सपोज्ड टू बी एडेड टुगेदर. सो आई बिलीव इसका आंसर आपके पास बनेगा, चेक कर लीजिएगा इफ यू गाइस आर ओके विद दिस, 24 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया. अच्छा, साइड बाय साइड मुझे एक आंसर ये भी दे दें बिफोर आई स्टार्ट विद द वर्क. तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ट्रू वैल्यूज टू बी सब्ट्रैक्टेड and errors are nonetheless still going to be added. So, एक सेकेंड ना, मैं हमाद फहीम को एंटर कर दूं, ये शायद डिस्कनेक्ट हो गया था. ऑल राइट, सो d माइनस d का रिजल्ट आई थिंक ये हो जाएगा. ठीक है, 9 प्लस माइनस 1 जो रूहुल्ला ने सजेस्ट किया है. परफेक्ट. अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. Okay, so I guess you would all agree area of shaded region should actually be area of the larger circle, if that makes sense. Huh? जगह जरा कम है ना, तो मैंने लार्जर सर्कल के लिए इस फॉर्म में लिख दिया, एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल. ठीक है, तो जरा वर्किंग करके देखते हैं. सो पहले मैं एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल लिख लूं.
एरिया का फॉर्मूला आई एम प्रिज्यूमिंग सबको लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. सो इफ यू गाइस रिमेंबर दैट, तो मैंने डायरेक्टली उसको अप्लाई कर लिया. एंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल ये हो जाएगा. ठीक है, सो कैपिटल टी एंड स्मॉल डी बेस्ड ऑन द डायग्राम. सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. कर ले सिंप्लीफाई तो जरा कन्वीनियंट भी हो जाता है. तो पहले सिंप्लीफाई कर दूं, फिर इसके बाद वैल्यूज को इंसर्ट करता हूँ. ठीक है, so this is the result for area of the shaded region. So LC for larger circle, SC for a smaller circle. डायग्राम से कोरिलेट कर लेना. अच्छा, अब पहले इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लूं. So D minus D was just 9 I guess. ग्रीन कलर से ही लिख लूं यार, तो ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो जाएगा. सो हमजा भाई सही कह रहे हैं, हमने D minus D का ऑलरेडी आंसर निकाला था, दैट इज 9. सो तेमिया तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, और D plus D का भी आंसर निकाला हुआ था, विच was 24. तो मैंने जो मेहनत करी थी ना, मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए था. वो मैंने गलती से नंबर्स उल्टे लिख दिए थे. 169.6 आ गया. ठीक है. अच्छा, ये ऑन ने लिखा है 169.65. पांच पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स मत लिखना, है ना. बस तीन तक भी, तीन से ज्यादा जाने की जरूरत वैसे नहीं है. तो अगर आपका 169.65 आ रहा है, बस 0.6 कर दें या 0.7 कर दें, इतना बस काफी है फॉर द टाइम बीइंग. So assuming it was 169.65, I've just written it down as 169.7. तो यार अब एरर कैलकुलेट करना है. सो लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी जनरेट कर लें, फिर नंबर्स लगा देते हैं. सो टू कैलकुलेट एरर, फॉर्मूला ये था. फॉर्मूला मैं लेफ्ट हैंड साइड से कॉपी कर रहा हूँ. सो आई एम होपिंग कि आपको याद होगा. याद नहीं भी होगा तो आपको नजर आ जाएगा अभी. सही है, तो जरा देख लीजिएगा, शायद आपको नजर आ जाए. तो अब इसका एरर कैलकुलेट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. अच्छा, पाई भी कांस्टेंट है, याद कीजिएगा, और 4 भी कांस्टेंट है. सो पाई की भी जरूरत नहीं है, और 4 को भी इग्नोर कर दीजिएगा. सो दोनों को रिमूव कर दें, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है. और राइट हैंड साइड पे ये बनेगा. रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर फ्रैक्शनल एरर्स वर एडेड टुगेदर. फिर से साइन की गलती कर दी मैंने. अब नंबर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ. नंबर्स आप लेफ्ट हैंड साइड से देखते जाइएगा. मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि नंबर्स आपको नजर आ जाए, जो भी नंबर्स चाहिए हो. नंबर्स आप राइट लेफ्ट से देख लीजिएगा. जिन नंबर्स को मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैं उनको येलो वाले मार्कर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ. सो आई थिंक आपके लिए जरा रिलेटेबल हो जाएगा. ठीक
ठीक है, numbers which I'm going to be using on the right hand side working, I've highlighted those numbers. ठीक है, तो पहले जरा एक नजर नंबर्स देख लीजिएगा। हमजा, मैं अभी राउंडिंग ऑफ कर लूंगा, बट फॉर दैट आई नीड टू गेट द आंसर फर्स्ट। तो पहले मैं जरा आंसर निकाल लूं कितना आता है, फिर इसके बाद राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो तुमने लिखा है फाइनल आंसर फॉर एरर। ओके, देखते हैं। तुमने लिखा है 30 आ रहा है। लेट्स सी, 25.9 तुम्हारा। तैमिया जरा कंफर्म कर लो, हमजा ने 25.9 बताया है। तो यार मेरा भी आंसर डेल्टा ए का वर्कआउट करके कितना बनता है? जी, माहीन भी यही कह रही है, 25.9। अभी राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा। सो ये मेरे पास एरर का रिजल्ट आ गया। Sir, जी बेटा, sir, we rounded 169.7 as our final answer, right? अभी तक नहीं किया लेकिन राउंडिंग ऑफ। अभी तक नहीं किया, अभी तक मैंने किसी भी आंसर में राउंडिंग ऑफ नहीं करी है। सो so I'm saying 160 169.7 wasn't coming like 169.65 lamba, whatever the whole राइट। thing हाँ, was. सो व्हाट आई सेड वाज कि 5 एसएफ लिखना बहुत ज्यादा अनयूजुअल होता है। So सो calculations में भी हम 5 नहीं हाँ, यूज अगर करते. जी अगर 5 सिग्निफिकेंट आ रहा हो ना, देन दैट्स अ बिट टू मच। सो फिर इसलिए मैंने Okay, उसको 4 पे राउंड ऑफ कर दिया था। ठीक है, सो जस्ट बिकॉज वो आंसर 5 तक जा रहा था ना, दैट वाज जस्ट टू टू लार्ज टू बी रिटन, इसलिए मैंने उसको राउंड ऑफ किया हुआ था। सही। okay. ऑलराइट, अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं यार। सो फाइनल आंसर के लिए वही कीजिएगा कि एरर को आपने पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, एज हमजा सजेस्टेड। सो एरर का वन सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर ही हैड ऑलरेडी सजेस्टेड 30 हो जाएगा। और फिर मेरा वही वाला स्टेटमेंट जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, इफ एरर इज इन टेंस देन, तब तक कोई ट्रू वैल्यू सजेस्ट करना चाहे तो कर दो। ट्रू वैल्यू मस्ट ऑल्सो बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, hence 169.7 rounds off to the nearest tens to become 170। तो जो फाइनल आंसर आपका बनेगा for the shaded region, 170 is the true value, 30 is the error। तेमिया ने पूछा हुआ है। यार अतेमिया, वो डेल्टा डी माइनस डी वॉज अ क्वांटिटी। सो क्वांटिटी का नाम थोड़ा सा अनयूजुअल था, इसलिए मुझे डेल्टा डी माइनस डी, बिकॉज दैट वाज द क्वांटिटी इटसेल्फ। बट माइनस डिड नॉट मीन कि हम उसकी सब्ट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं। द क्वांटिटी बाय इटसेल्फ वाज डी माइनस डी। सो बेसिकली मैंने उसका आंसर तो तेमिया पहले से निकाल लिया था। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 1/9 लगा दिया था। ठीक है, सो इफ दैट मेक्स सेंस। सही। तो दैट इज द एग्जैक्ट रीजन तेमिया कि मैंने ये कैलकुलेशन पहले से क्यों करके रखी थी एज अ साइड नोट, है ना। सो आई न्यू कि यार मुझे ये 1/9 को भी यूज करना पड़ेगा, एंड आई न्यू कि मुझे 1/24 को भी यूज करना पड़ेगा। अच्छा, बिफोर आई टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, if the question was, अगर ये होता ना, गिव योर आंसर इन मीटर स्क्वायर, तो प्लीज कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूछते हैं ना गिव योर आंसर इन मीटर स्क्वायर, तो भाई सीधा सीधा यही आंसर पहले लिखना, कोई डेढ़ होशियारी मत कीजिएगा। लीव द आंसर एज इट इज, सेंटीमीटर स्क्वायर वाले आंसर को पहले लिखिएगा और बस ब्रैकेट्स बनाकर
ब्रैकेट्स के बाहर जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था 10 टू द पावर ऑफ -4 लगा दीजिएगा और रिजल्ट आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इन केस अगर चाहिए होता तो 10 टू द पावर ऑफ -4 जी, जो हमजा ने सजेस्ट किया है ना। तो पूरी वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया है। सो माइट एज वेल इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन कि आप मीटर स्क्वायर में निकालो, तो बस लास्ट स्टेप के अंदर 10 टू द पावर ऑफ -4 का एक्स्ट्रा टर्म इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीवेज, तो ठीक है, वर्डिंग्स प्लीज देख लो, मैं फिर कैलकुलेशंस कर लूं। तो इट सेज द डायग्राम, थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं रीजनेबल अमाउंट तक, आई गेस काम चल जाएगा। ओके, द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ अ स्मॉल बॉल फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है एंड इट्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू अ क्लियर लिक्विड in a glass tube. There are two marks on the tube. The top mark is positioned at 115 plus minus 1 millimeters on the adjacent rule, and the lower mark is at 385 plus minus 1 millimeters. तो डिस्टेंस की आपको दो वैल्यूज गिवन है ना, एक डिस्टेंस आपके पास गिवन है 115 प्लस माइनस 1 और दूसरा डिस्टेंस आपको गिवन है 385 प्लस माइनस 1। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पहले तो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का आंसर सब्ट्रैक्शन से आंसर आप करके देख लें। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिटवीन द टू मार्क्स टर्न्स आउट टू बी एज फॉलोज। ये मैंने ग्रीन से लिख दिया है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल। सो इनिशियल मार्कर गिवन था, फाइनल वाला मार्कर गिवन था। Subtraction will give me the distance traveled by the ball between the two markers, which in this case appears to be 270 plus minus 2. अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है, आगे रीड कर रहा हूँ। The ball passes the top marker at a time of 1.50 plus minus 0.02 and passes the lower marker at a time of so and so. So time की भी दो values given है. So it passes the first marker at a time of 1.5 plus minus 0.02 and it passes the second marker at a time 3.50 plus minus 0.02. So again the subtraction between the two answers will tell me the time taken to travel between the two markers and that time will be, subtraction आप कर लें, result आपका ये बनेगा। ठीक है, now the question is asking us, अब मैं आगे रीड कर रहा हूँ, which expression calculates the fractional error in the value of the speed. So they are asking us to calculate the fractional error delta s upon s in the speed. Result क्या बनेगा? So the formula should be speed is equal to distance upon time. On the left hand side, it becomes delta s upon s. On the right hand side, it becomes delta d upon d plus delta t upon t. Now I have the numbers from the top, so I can plug in these numbers to find out how much will be the fractional error in the speed. So delta d upon d can be replaced by the result 2 divided by 270 and delta t upon t can be replaced by the result 0.04 divided by 2.00. So this works out to be my final answer. So I guess जरा answers को मैं थोड़ा zoom in कर देता हूँ if the need be. So I think वैसे मैं तो मेरा जी एक सेकेंड ना अभी आंसर दे देता हूँ. So the answer works out to be A. Now before I answer him,
the working which I've done, there was no point in doing this working because if you would have seen, तो मैंने यहाँ पर एक shorter version का answer लिखा था. मैं वापस लिख देता हूँ. If you recall, fractional errors are always added. तो अगर आप पूरी वर्किंग को स्किप कर देते, so if you skip the entire working, ना तो जो मैंने किया अगर आप उसको completely ignore कर देते हो, and just the fact that fractional errors are supposed to be added together, उसी की basis पर अगर आप working करते हो, so let me zoom in onto the answers. तो पहले वाले में प्लस का साइन है, सेकंड वाले में माइनस का साइन है, थर्ड वाले में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फोर्थ वाले में डिवाइड का साइन है. तो आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि बॉटम के तीनों आंसर्स तो वैसे ही स्ट्राइक आउट हो जाएंगे. And the fact that fractional errors are always supposed to be added together, so that brings us to A as B. कशाफ, तुम्हारे बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बेटा. Guys, can anybody tell कशाफ to कशाफ प्लीज, कशाफ या कशाफ. अच्छा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा मुझे लगता है. ओके यार, मैंने आई थिंक म्यूट कर दिया उसको. ठीक है गाइस जी. सो एज आई वाज सेइंग कि आपको पूरी वर्किंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. इनफैक्ट सिंस वी नो दैट फ्रैक्शन एरर्स आर सपोज्ड टू बी एडेड टुगेदर, सो आप बॉटम के तीनों आंसर्स को इग्नोर करके स्ट्रेट अवे ए वाले आंसर को मैच करके जज कर सकते हो. ठीक है. सो आई थिंक टेमिया ने भी यही स्टेटमेंट लिखा था कि without doing all the working, can't we just select A? So yes, you can, because fractional errors are always added together. ठीक है. So nonetheless, I wanted to do the working ताकि at least background में आपको principle तो याद हो कैसे किया था, but जरूरत नहीं है, simply because of the fact that the fraction errors can be directly added together. Next वाला देखिएगा. आप वर्डिंग्स रीड कर लो, तब तक मैं आंसर्स को इरेज कर दूं. Alright, so Kashaf, are you there? This is Kashaf Yusuf. Respond करो यार, yes no करके कुछ. पता नहीं उसको मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है. एनीवेज, तो आगे देख लेते हैं यार. 12th के अंदर it says the uncertainty in the value of the momentum of a trolley passing between 2 points x and y varies with the choice of the measuring instrument. Measurements for the same trolley are made by using different instruments and they are recorded. So क्या क्या given है देखिएगा. Distance measure करने के लिए दो options given है. You have a ruler with centimeters marking and you have a ruler with millimeters marking. अच्छा, टाइम मेजर करने के लिए भी दो ऑप्शंस हैं. You can measure time to the nearest 0.5 seconds or you can measure time correct to the nearest 0.1 seconds. और मास को भी मेजर करने के दो ऑप्शंस हैं. You can either measure mass correct to the nearest grams or you can measure the mass correct to the nearest 10 grams. The question is asking you which measurements, one for each quantity, leads to the least amount of error in the calculation of the momentum. So आपसे पूछ रहे हैं यार कि कौन से वाले ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरर होने का चांस होगा. अब आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री कि अगर आपको एरर को स्मॉलेस्ट रखना है तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ना कि यार आपको सेंटीमीटर्स वाली मेजरमेंट के लिए जाना चाहिए या मिलीमीटर्स वाली मेजरमेंट के लिए जाना चाहिए, तो श्योरली यू वुड एग्री that a scale which has a millimeters division, if I select that one, then my error certainly gets reduced.
So between the two options, I should go for the millimeters because that will help me to keep the error as small as possible. हमजा ने 245 सही लिखा हुआ है। रूहुल्ला फॉर्मूले की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब टाइम के अंदर देख लेते हैं। So between the two options, I guess I should go for the time which is rounded off to the nearest 0.1 second. So that makes more sense क्योंकि उसमें एरर का चांस आपका कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली masses के अंदर if I go for the one which expresses mass to the nearest grams, इसकी selection makes more sense ताकि आपका error reduce to a minimum हो जाए। So based on the options given to us, if I go for option number 2, option number 4 and option number 5, so ये वाला वो scenario था which allows me to keep the value of the error at its smallest, तो 245 के साथ आपका D बन जाएगा। मोहम्मद हुसैन ने पूछा हुआ है why millimeters? Sir, centimeters versus millimeters. Shouldn't a value or shouldn't an instrument which can measure to the nearest millimeter, Mohammed Hussain, give you the smallest bit of an error as compared to an instrument which measures correct to the nearest centimeters? Because millimeters is 1/10 of a centimeter. And if the question would have been कि आपको largest error चाहिए है, तो फिर मोहम्मद हुसैन मैं B की जगह फिर A को select कर देता। So if you are there, जरा okay करके acknowledge, all right, तुम्हारा हो गया, सही है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं यार। रीड पहले कर लो आप। The Young's modulus of the material of a wire is to be found. The Young's modulus is given by the equation, so formula आपको given है। The wire is extended by a known force and the following measurements are made. Which measurement? अच्छा, पिछले वाले में smallest पूछा था, यहाँ पे the question is asking you which measurement has the largest effect on the uncertainty. So पूछ रहे हैं यार कौन सी क्वांटिटी के अंदर एरर आपका सबसे लार्जेस्ट बनेगा, है ना। अब हाउ डू वी डिसाइड इन दिस केस यार सबसे लार्जेस्ट एरर कौन सी क्वांटिटी में होगा? तो इफ आई वर टू राइट डाउन द फॉर्मूला, then this is how my arrangement should look like. Delta E upon E. On the right hand side, 4 को इग्नोर कर देना because that's a constant. Delta F upon F. अच्छा, लेंथ के लिए डेल्टा L upon L. फिर डिनोमिनेटर के अंदर पाई को इग्नोर कर दीजिएगा अगेन बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट। डी स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी, और आखिर में x है तो दैट विल बी डेल्टा x अपॉन x। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग मी सबसे लार्जेस्ट एरर कौन सी क्वांटिटी के अंदर होगा। तो अगर कैलकुलेटर हो तो आपको चाहिए हो तो प्लीज कैलकुलेट करें, मैं लिख देता हूँ। फोर्स का ये आंसर बनेगा, कहाँ लिखूं, नीचे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। फोर्स का एरर ये बनेगा, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना तो मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा। आई कैन रादर सेव माय टाइम and not do the calculations, and I'll tell you why not. अच्छा, लेंथ का ये बनेगा, सबको मत कैलकुलेट करना, जरूरत नहीं है। Diameter makes the most sense for an obvious reason because the fractional error in the diameter is actually getting multiplied by 2. So if I would be in your place, मुझे सबसे ज्यादा चांस लग रहा है कि डायमीटर का एरर पॉसिबली सबसे लार्जेस्ट होगा बिकॉज द एरर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2। सो डायमीटर के लिए दिस शुड बी द रिजल्ट। फिर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो प्लीज बी माय गेस्ट, सबके अलग अलग आंसर्स निकाल के चेक कर लें। बट इट अपीयर्स दैट द फैक्ट दैट डायमीटर के साथ 2 आ रहा है, सो ज्यादा चांसेस ये हैं कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एरर शायद आपके डायमीटर में आ रहा हो क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट नॉनदलेस इफ यू वांट टू चेक, सो चेक देम इंडिविजुअली
and compare the answers to see कि सबसे largest error किसके अंदर induce हो रहा है. मैंने बहरहाल सारी वैल्यूज को लगा तो दिया है. तो अगर है किसी के पास कैलकुलेटर तो प्लीज जरा सबके अंदर कैलकुलेशंस कर लीजिएगा. बट एज ए सेड, माय वोट गोज टू डायमीटर सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके अंदर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है. सो फिर आई डोंट थिंक कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है. बट नॉनदलेस इफ यू वांट तो चारों के इंडिविजुअल आंसर्स निकाल लीजिएगा. अच्छा, मोहम्मद नकवी ने डायमीटर का आंसर निकाल लिया है. सो मेरा ख्याल है डायमीटर वर्क्स आउट टू बी द रिजल्ट. सो लेट मी जस्ट मार्क दैट फर्स्ट और फिर मैं शाहजैन का स्टेटमेंट रीड कर लूं. अब अगर आपको कैलकुलेट करना है ना तो प्लीज चारों करके देख लीजिएगा वैसे. बट इफ आई वुड बी इन योर प्लेस आई वुड प्रोबब्ली नॉट डू द कैलकुलेशन. शाहजैन हैज सेड कुड बी से it's B. Since you are dividing it by half and multiplying it by 2, so you're pretty much quadrupling it. हाँ बिल्कुल सही है. And so basically the error kind of gets amplified multiple times. So consequently, I believe diameter should be the most safest choice out of these options. Okay, अगला वाला देखते हैं. मेरा ख्याल है 14th वाला तो आप खुद ही रीड कर लोगे. तो जरा प्लीज 14th वाला देख लो. ये खुद ही अटेम्प्ट कर लो. मुझे 15th वाला एक्चुअली कराना है. 14th वाला खुद पढ़ लो. फर्स्ट सिलेंडर का डायमीटर गिवन है. सेकंड सिलेंडर का डायमीटर गिवन है. And the question is asking you the difference in the diameter is calculated. तो मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करके साइड पे लिखा हुआ है. तो आप आंसर को देख लो. And the question is asking you how much is going to be the error. So it appears कि आपका D का आंसर आ जाएगा. ठीक है. So difference in diameter की working I've already done. I've subtracted the true values and I've added up the errors. तो आप जरा कंप्लीट करके फिगर आउट कर लीजिएगा. सो आई बिलीव कि आपका रिजल्ट डी के साथ मैच कर जाएगा. ओके, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. वंस आई एम थ्रू विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ 15 ना कोई काउंटर आर्गुमेंट तो पूछ लीजिएगा ताकि उसका भी साथ साथ सजेशन आ जाए. 15 पे देखिएगा क्या पूछा मैं. अ क्वांटिटी x varies with temperature theta as shown. ठीक है. सो द ग्राफ इज गिवन टू यू फॉर अ क्वांटिटी x against theta. Okay. Theta is determined from the corresponding values of x by using the graph. X is measured with a percentage error of 1% of its value at all temperatures. So x का error आपको given है 1%. And the question is asking you which statement about the error in theta is going to be correct. तो थोड़ा carefully देखिएगा. So the error in x is given to you as 1%. And they're asking you which statement regarding the error in theta is going to be correct. So let's start with the statements which I have written. So my first statement is percentage error in x is given to you as 1%. Then my second statement is from the graph, you can notice that x is directly proportional to theta. Graph देखिएगा. So you would agree with me that from the graph, it can be recognized that x is directly proportional to theta. Therefore, we can conclude that the percentage error in theta should also be 1%. ठीक है. So due to direct proportionality, we have recognized that the percentage error in theta must also be 1%. And then I've written the final conclusion. So if the temperature is going to be small, that is close to 0, then the error in it will also be least. And so if there is a 1% error in the measurement of temperature, so if the temperature is a small value, then the error which is 1% is also going to be small. So I think the question is saying which statement about the error in theta is correct. So based on the last 4 lines, if the temperature is a small value, that is close to 0,
then you would expect the error in it to also be small. So अगर आप C वाला statement पढ़ें, that kind of makes the most sense, where it says the actual error in theta is going to be the least when the temperature is close to 0 degrees. So it makes sense because अगर temperature छोटा होगा close to 0, then 1% of error is also going to be the small. So hence the statement in C, the actual error in theta is going to be the least when the temperature is close to 0, kind of makes the most sense. सही? अब आप लोग पहले read कर लें, and if you're okay with this result, so uh, Temia ने पूछा, I was expecting this question. Why didn't we select A? Look carefully at A. Statement गलत लिखा हुआ है. Temia, percentage error is 1%. So percentage error is going to be constant for all values of theta. So whether theta is close to 0 or theta is close to 100, percentage error is going to remain the same because percentage error तो constant होगा. है ना? हमजा ने तुम्हें आंसर भी दे दिया है तैमिया. इनफैक्ट हमजा ने बिल्कुल सही वर्डिंग यूज करी है because his statement is percentage error will always be 1% as quoted by the question, whether close to 0 or close to 100. है ना? So percentage error ना कम होगा ना ज्यादा होगा, बल्कि percentage error की वैल्यू तो हमेशा constant होगी. So hence A cannot be selected. In fact, Temia, question में statement already given था, which was telling you why you cannot select A. Look carefully. I'm highlighting that statement with a yellow marker. So it was given to us that the percentage error is 1% at all temperatures. So doesn't that kind of tell you that the value of the percentage is going to remain constant, irrespective of the values of the temperature? सही? Okay जी. Next वाला देखिएगा. ठीक है, तो let me repeat myself. कि if error in temperature is 1%, then if the temperature is low, the error which is 1% of the temperature is also going to be low. So you would expect the error to be the least when the temperature is close to 0. And hence, C works out to be the most obvious choice. All right. Here, next वाला देख लो. अच्छा, कुछ questions जो है ना, homework में भी दे दूंगा. तो मैंने जिस तरह 15 questions कराए हैं ना, so अभी remaining questions भी हैं, so अभी एक आध और करा दूं. फिर ये है कि मैं कुछ questions homework में दे दूंगा, so theory के भी दे दूंगा और MCQs के भी दे दूंगा. So इनको please आप complete कर लेना. So सारे questions के answers तो already marked हैं. So I don't think मुझे अलग से आपको answers देने की जरूरत है. But theory के questions को review कर लीजिएगा और MCQ के questions को attempt कर लीजिएगा. Next class में कोई difficulty हो तो पूछ लीजिएगा, और अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं next वाली class से kinematics start करा दूंगा. एक 16th वाला करा दूं before I conclude. आप जरा wordings देख लें. The speed of a car. फिर जो रह जाए ना, MCQs रह जाए वो भी आप घर पे attempt कर लीजिएगा, और जो थ्योरी के क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा उनको भी जरा एक नजर अटेम्प्ट कर लीजिएगा. कोई डिफिकल्टी हो तो नेक्स्ट वाली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा. Okay, so 16th में given है, the speed of a car is calculated from measuring the distance traveled and the time taken. The distance traveled is measured as 200 meters with an error of plus minus 2 meters. So distance is 200 plus minus 2. The time is measured as 10 seconds with an uncertainty of plus minus 0.2 seconds. So time is 10 plus minus 0.2. And the question is asking you, calculate the percentage error in calculating the speed. स्पीड का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है. जरा फॉर्मूले को अप्लाई करके देख लेते हैं. मैं लिख देता हूं दोबारा, थोड़ा छोटा करके लिख लूं. So speed will be distance upon time. So delta S upon S, delta D upon D, नंबर्स डायरेक्ट लगा देता हूं, प्लस डेल्टा T अपॉन T. सॉल्व करेंगे ना, तो आई थिंक यहां से इसका आंसर जरा प्लीज कैलकुलेट करके ये देख लेना कितना बनता है. आई बिलीव दिस आंसर विल कम आउट टू बी, आई हैव अ फीलिंग 0.03. तो जरा पहले ये चेक कर लो. मेरा ख्याल है ये आंसर बनेगा
but this is the answer for delta S upon S. And the question was asking you कि आपको percentage calculate करनी है. तो percentage error in S should work out to be 3%. Okay, so I've shown you the numbers with which we have calculated the fractional error in S. And since the question was asking us to work out the percentage error, so the result was coming out to be 0.03. तो percentage error का आंसर आपके पास 3% बन जाएगा. Alright. ठीक है, so 29 की वर्किंग देख लें. आप लोग रीड कर लो, मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, so यार 29 के अंदर तहमिया it says meter rule is supported horizontally by two pivots as shown. Further आगे the vertical displacement y is given by the following equation. So they have suggested an equation for us. K is a constant. L denotes the length. M denotes the mass. T denotes the thickness. And W denotes the width of the ruler. फिर यार आपको सारी वैल्यूज भी गिवन है, लेंथ गिवन है, मास गिवन है, थिकनेस गिवन है और विड्थ गिवन है. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको सजेस्ट करना है which measurement contributes most to the uncertainty, which means कि यार आपको ये सजेस्ट करना है कौन सी क्वांटिटी की वजह से the error is going to be the largest. तो पहले तो यार मैंने इक्वेशन को देखिएगा फॉर्मुलेट कर दिया है. So let me just quickly go through that. और फिर मैं नंबर्स लगा देता हूँ. So delta y upon y. K बेटा कांस्टेंट है, उसको इग्नोर कर देना. M should be written as delta M upon M. Length is getting cubed. So cube की वजह से this should be 3 times delta L upon L. Width के लिए it will be delta W upon W. अच्छा, thickness भी cube हो रही है. So thickness के लिए भी it should be 3 times delta T upon T. And I think looking at the numbers Temia, it is kind of apparent कि largest error शायद इन दोनों में से किसी में आएगा for an obvious reason, because the fractional errors are actually getting multiplied by 3. So error आपका kind of enhance हो जाएगा. So इन दोनों को जरा पहले टेस्ट आउट कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट एरर कौन सी क्वांटिटी में आ रहा है. कैलकुलेटेड द आंसर, आई बिलीव कि इसका एरर का अमाउंट शायद मुझे लग रहा है सबसे लार्जेस्ट आ रहा है. आपके पास अगर हो कैलकुलेटर तो आप दोनों को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. सो आई गेस आइडिया हो जाएगा. हाँ आमिना, काइनेमैटिक्स तो पूरा हो जाएगा लेकिन डायनेमिक्स चल रहा होगा. ओके यार, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है. सो तैमिया प्रोसीड कर जाओ. ऑलराइट, 24 देख लेना यार. So yeah, 24 के अंदर the question says, वर्डिंग देख लीजिएगा. A single sheet of aluminum foil is folded twice to produce a stack of 4 sheets. The total thickness of the stack of sheets is measured to be 0.08, sorry 0.80 plus minus 0.02. So the 4 sheets together when stacked up gives us a result of 0.8 plus minus 0.02 millimeters. फिर आगे given है, this measurement is made using a digital caliper with a zero error of minus 0.20 plus minus 0.02. सबसे पहले ये जज कर लेते हैं कि वो जो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट minus 0.2. So what does a zero error of minus 0.2 means? है ना, so minus का मतलब ये है
मैंने वर्डिंग आगे लिखी हुई है आंसर की फॉर्म में. It means that due to zero error, our value is going to be understated by 0.2. So आंसर जो हमारा आ रहा होगा ना, नेगेटिव साइन इंप्लाई करती है कि वो आने वाला आंसर हमारी ट्रू वैल्यू से कम आ रहा होगा, अंडरस्टेटेड आंसर होगा. सो वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू और दिस नंबर टू गेट द फाइनल आंसर. तो दैट मीन्स कि जो आपकी रीडिंग थी ना, मैं वर्किंग दोबारा यहाँ कर देता हूँ. तो जो आपकी रीडिंग आ रही थी उसके अंदर अगर आप इस जीरो एरर को एड अप करोगे, बिकॉज द जीरो एरर विद अ नेगेटिव साइन वाज इंप्लाइंग कि वो आपकी वैल्यू को अंडरस्टेट कर रहा था. फिर अगर आप एड अप करोगे ना तो रिजल्ट आपका बनेगा 1.00. और एरर्स को तो वैसे भी हमेशा एड अप किया करते थे, तो एरर्स को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 0.04 बनेगा. ठीक है. सो द ट्रू वैल्यू वाज गेटिंग अंडरस्टेटेड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन. सो इसलिए मैंने 0.8 के साथ 0.2 को एड अप कर दिया. तो ये मेरे पास 4 शीट्स की कंबाइंड वैल्यू हो गई है. आमना ने 0.6 लिखा है. यार ऐड ऐसे करते हैं ना बेटा, 0.02, 0.08. इनफैक्ट आमना मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ 0.8 is understated by 0.2, then the actual value should be 1.0. This is what I mean. If your result is getting understated by 0.2, तो आप 0.8 के साथ 0.2 को एड अप करोगे तब जाकर आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा, विच इज 1. सो 4 शीट्स का कंबाइन आंसर बेटा आपका ये हो गया. और सिंस आपको तो सिंगल शीट की कैलकुलेशन करनी थी, तो सिंगल शीट का ये आंसर आ जाएगा. तब तक अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा. एंड सिंस यू वर आस्क्ड कि आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, सो परसेंटेज एरर का रिजल्ट आपका ये आ जाएगा. Which I believe turns out to be 4%. हुसैन ने पूछा why is the error 0.01? हुसैन 4 शीट्स का एरर was 0.04 ना. 4 शीट्स का एरर was 0.04. सो बेटा सिंगल शीट का एरर फिर 0.01 हो जाएगा ना. ओके. रूला तुम्हें आंसर दे दूं. नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है योर नीडल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो. ठीक है रूला. ओके. हमजा ने भी एक चीज सजेस्ट करी थी बट देन उसने बाद में कह दिया है कि सही है. ऑलराइट. और कोई क्वेश्चन रह गया था? 25 आई थिंक किसी ने पूछा था. जी 25 भी देख लीजिएगा. 25 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है. तो जरा नंबर प्लीज देख लीजिएगा. ओके यार. तो 25 के अंदर बेटा द मेजरमेंट ऑफ 4 ब्लॉक्स इज दिस, और द जीरो एरर इज दिस. सो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, अगेन रिमेंबर एरर्स को ऐड करते थे. सो द एक्चुअल रीडिंग ऑफ 4 ब्लॉक्स
should be 8.4 plus minus 0.2. And the question is asking us that you are supposed to calculate the width of one rod. है ना? So अगर 4 rods की, मैं blocks की बजाय rod लिख लेता हूँ. So 4 rods के लिए आपके पास ये आंसर आ रहा था 8.4 plus minus 0.2. And you are asked to obtain the reading of one rod. No? So width of one rod simplify कर लीजिएगा. So I think you will get 2.1 and you will get 0.05. फिर इसको appropriate form में लिखेंगे. So this will become your final answer. जी अमार, तुमने सही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो नंबर 0 दिया हुआ है ना, इसका मतलब है देयर इज नो जीरो एरर. राइट. सो प्रीवियस वाले केस के अंदर देयर वाज अ नेगेटिव जीरो एरर व्हिच वाज अंडरस्टेटिंग योर आंसर, इसलिए मैंने उस वैल्यू को ऐड अप कर दिया था. और यहाँ पर तो खैर देयर वाज नो जीरो एरर, तो ना मुझे ऐड करना पड़ा ना सबट्रैक्ट करना पड़ा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी. अमीना, ये कहना कि वी ऑलवेज ऐड द जीरो एरर, वो तो गलत है ना. अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा जैसे कि पहले था तो उसको ऐड करेंगे, और बेटा अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो फिर तो सबट्रैक्ट करेंगे ना. सो आई थिंक तुमने अब स्टेटमेंट सही लिखा है. सो इफ वी हैव अ पॉजिटिव वन देन वी विल हैव टू सबट्रैक्ट इट. बिल्कुल सही लिखा हुआ है तुमने. ओके गाइस, मैंने कोई और क्वेश्चन अगर ऊपर मिस आउट किया हुआ हो तो जरा देख लीजिएगा. हसन ने कहा था हाउ डिड आई गेट 0.08. हसन, वो सॉर्ट आउट हो गया प्लीज. हसन राशिद, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट आउट हो गया? वो एक्चुअली ऊपर मिस हो गया था. यस सर, हो गया. ठीक है. ऑलराइट यार, कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज देख लें. और कोई? ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन 24 में तेमिया, परसेंटेज एरर जब तुम कैलकुलेट करोगी तो परसेंटेज एरर तो सेम रहता है ना, बिकॉज द फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम. सो अगर तुम चारों शीट से भी परसेंटेज एरर निकालोगी तो भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज परसेंटेज एरर कैन नॉट चेंज ना, बिकॉज परसेंटेज एरर इज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इन 200. सो परसेंटेज एरर इन्वॉल्व्स फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के अंदर तो आपका रिजल्ट अनचेंज रहता है. सो तुम अगर चारों शीट्स का भी परसेंटेज एरर निकालोगी तो उसको बाद में डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना, बल्कि जो तुम्हारा चारों शीट्स का आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा. फॉलो कर रही हो तैमिया, क्या बताया मैंने? ओके देखो तैमिया, मैं ये कह रहा हूँ, इफ यू हैव अ वैल्यू 25 प्लस माइनस 1, इसका भी एरर 4% होगा. एंड इफ यू हैव 100 प्लस माइनस 4, इसका भी 4% होगा. सो आपको बाद में डिवाइडेड बाय 4 करने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है. ऑलराइट गाइस,